Ladies and gentlemen, as a news channel, we understand the need for nuance and balance in any story we report. We know that we are not the judge or the jury or the executioner. We know we are not here to run a media trial. That in most stories we report, the truth lies somewhere in the middle. But ladies and gentlemen, in some stories, you need to pick a side. Because there are no shades of grey in some stories. So you either believe what India's women wrestlers are saying, or you believe what BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh is saying. I know who I believe. I believe the 6 women wrestlers who have spoken out against a powerful predator who once had the power to decide their destinies. And these women haven't just spoken. They have detailed the stalking, the molestation, and sexual harassment that they have faced, sometimes in private places and sometimes in public as well. Mera now has managed to access the 1599-page charge sheet that the Delhi police has filed. If you remember, they weren't even willing to file an FIR. The details that the 6 women have revealed in the charge sheet will make you deeply uncomfortable. But the truth is often uncomfortable. So bear with it. Bear with it for the sake of many, many young girls across this country who will take courage from these wrestlers and speak up for themselves someday. Bear with it for Indian sport that needs to look deep within and clean up the patriarchal rot that encourages a conspiracy of silence. What you will hear is ugly and it's uncomfortable. But bear with me. This is the testimony of victim number 1, who was allegedly sexually harassed by Brij Bhushan Sharan Singh not once, not twice, but 3 times. This is what victim number 1 says happened to her in 2016. I'm just quoting from the charge sheet. She says there was indecent behavior during the Olympic trials. This was an indecent sexual contact, that she was molested in a dining area where Brij Bhushan asked her to sit. He then touched her private parts and stomach with quote-unquote bad intentions. Now, these allegations, by the way, are backed by 2 co-wrestlers who witnessed this sexual contact. Then it happened again in 2017. Victim number 1 says, and I quote, "I was inappropriately touched in the WFI office," which is the Wrestling Federation of India's office. And where does this office, just by the way, ladies and gentlemen, run from? It used to run from Brij Bhushan Sharan Singh's residence. Victim number 1 says she was touched on the palm, on the knee, on the thigh and shoulders without her consent. It happened a year later again, in 2018. She again testifies. She says, in January, he hugged me tightly and didn't let me go for another 15 to 20 seconds. This happened at the City Fort Stadium. Then in August, she was again hugged tightly and she had to protect her breasts. Ladies and gentlemen, this is a charge made by a woman wrestler who has shed sweat and blood for this country. And yet her harasser remains arrogant and he remains defiant. इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं? 6 आपके खिलाफ इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं? 6 आपके खिलाफ इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? Now listen to the testimony of victim number 2. It dates back to March 2022, which is nearly a year and a half ago. She says she was molested by Brij Bhushan Sharan Singh during a group photograph when she was in the last row. He told her to come to the front. He then touched her from behind with bad intentions. She says, "I tried to move away. He pulled me back towards him." These are charges, ladies and gentlemen, that the Delhi police has corroborated with witnesses and technical evidence. And yet the man the Delhi police says is liable to be punished wants to know why he should quit as MP. इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं? 6 आपके खिलाफ
इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? है आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं? है आपके खिलाफ इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? है आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? Now, if Netaji still wants to know why everyone is demanding his resignation, here it is. A third wrestler is telling the Delhi police, again in the charge sheet, what happened to her in 2018. She says, I was molested by Brij Bhushan Sharan Singh in a warm-up area during stretching. He called me to a corner to check my breathing, asked me to lie down. He then put his hand on my chest. He lifted my t-shirt and he touched my stomach. I said I was fine, but he continued to touch me inappropriately. Ladies and gentlemen, Brij Bhushan Sharan Singh is the WFI chief. He was never sacked. He's not a coach. He's not a physio. What business does he have touching a woman athlete's body? No business at all. And yet he does it with impunity over and over and over again. And yet he has the confidence to do this. Why? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं? है आपके खिलाफ इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? है आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं? है आपके खिलाफ इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? है आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? Brij Bhushan Sharan Singh. This is a sitting member of parliament from Kesarganj in Uttar Pradesh. A 6-time MP accused of stalking, molesting and harassing. As WFI chief, what was his responsibility? His responsibility was to protect and nurture young women who came into the sport with dreams in their eyes. For many, it turned into a nightmare. Before I go to my guests, I want to come to Karishma, who is joining us in the studio. Karishma, you're the one who's been tracking this story from day one. On that day, that unprecedented day, when some of our top wrestlers came to Jantar Mantar and started their protest, to today. I want to ask you, you're the one who has accessed the charge sheet. It is almost 1,600 pages. The Delhi police has corroborated all the claims that the 6 women wrestlers are making with eyewitnesses. So there are eyewitnesses to back their claim, and there is technical evidence to back their claim, like call data records, etc. What shocks me, Karishma, is the fact that when you look at the testimonies, is that these women were not just harassed, molested in private places, like say the WFI office, which essentially was Brij Bhushan Sharan Singh's residence, but also in public spaces. Yes, absolutely, Shreya. Not just public places. There are instances from when they were harassed abroad. There are instances from Kazakhstan. There are instances from Mongolia as well. We are looking at multiple instances outside India. So much so that it happened in an area where the wrestlers warm up during stretching, where the athlete, one of the victims said that I was standing. He said he wants to check my breathing. I said, okay. He specifically asked me to lie down, and then he touched my chest and slid his hand down to my navel and to my stomach. This is one of the statements that we've accessed from the charge sheet. There are 6 complainants and 6 such statements that have been made, and one athlete has made statements of multiple instances with Brij Bhushan Sharan Singh harassing her. Shreya, there is a statement wherein a victim says that she went to the WFI office because she needed medical treatment, and the WFI president offered her the medical treatment but said that in lieu of that you have to accept my sexual advances. So this is the sort of treatment that has been meted out to these women athletes, to these women wrestlers who finally found the courage to speak up. Remember, they've been toiling very, very hard. They come from very humble backgrounds. It takes a lot for them to reach at a level where they can speak up while also ensuring the security of themselves and their family members. And that is why it is so important to commend them for trying to speak up, reaching the courts, knocking the doors of the courts for justice. Karishma, this is a man who's been in charge of Indian wrestling for 12 years. Forget the fact that he's a BJP MP, a powerful one, that is, who commands the loyalties of a particular community in Uttar Pradesh. But he's been in charge of
the Wrestling Federation of India for 12 years. There are 6 women, Karishma, who have spoken out and put their charges on a charge sheet. Are you hearing that there could be more? Because this is exactly what had happened at, during the Me Too phase. That it took one woman and then there was a flood. Well, we tried speaking to the eyewitnesses that have corroborated what some of these victims have said, and they have spoken about larger events as well. You ask them about specific events that these victims talk about, but they also go on to talk about Brij Bhushan Sharan Singh's character in a larger extent, in a larger space, where they say that, you are talking about this incident from 2022, but I can tell you about what happened in 2019 or what happened in 2018, on how his, attitude or behavior with women wrestlers, junior or senior, is somewhere same. I remember speaking to one of the eyewitnesses who said that Brij Bhushan Sharan Singh started giving $100 as a prize money to women wrestlers who did well. So the coaches had to step in and say that you cannot just be doing it with the women wrestlers. There needs to be equality for the male wrestlers as well. So these are the small things that the eyewitnesses have also pointed out, that in the last few years, how this has been set up against Brij Bhushan Sharan Singh, because all of this, of course, when 6 women wrestlers are coming out and speaking. Top wrestlers. Yes. These are India's top wrestlers. We can't name them. Yes. I mean, there are reasons you can't name them, but these are India's top wrestlers. My point is, why would the sporting establishment not believe these women and believe Brij Bhushan Sharan Singh instead? I'm asking you this because he was not sacked as the WFI chief. Elections have not been held, and there is a larger body that has taken. The IOA has taken over. Yes, So he's not been sacked. He's not been sacked as the WFI chief. He's not been sacked as an MP. I want to ask you why the sporting establishment in this country continues to back him. Is there any good reason? Because there was an oversight committee. Mary Com was heading it. The committee's mandate was to find out whether he's guilty or not. It didn't tell us whether he's guilty or not after, a long time. And it didn't even recommend a Delhi police probe into the case. Why is there the strong backing for this man who, I frankly don't understand why, but go ahead. Well, talk about the oversight committee. It is sort of a mystery that after what happened in January, the oversight committee was made. And for the longest time, all journalists and the wrestlers alike were waiting to see what that report said as far as the oversight committee had written it. But till the wrestlers decided to come back again and sit at Jantar Mantar in April again, there was nothing that one could read from the oversight committee. Once the wrestlers decided that enough is enough, only then did the oversight committee and the Sports Authority of India together put out a statement which said that, we've analyzed the statement, we are going to improve ourselves now, but nothing concrete, meaningful happened. Remember, these wrestlers had to wait and fight to even get a FIR filed against Brij Bhushan Sharan Singh. So why this has happened is something we will have to wait and understand why there has been no action that has been taken. Like you said, he wasn't sacked. He was asked to step aside in January. He hasn't, of course, taken any decisions in WFI since, because now the ad hoc committee takes charge of it. But where this defiance is coming from is something that we'll have to wait and see. Maybe tomorrow when the court hears it, the Rouse Avenue court at 2:30 p.m. Shreya, maybe we get some clarity. But for the moment, he continues to be defiant of all the charges that have been made against him. Karishma, we'll leave it there with you. Thank you so much for joining us and giving us these details of the charge sheet. Tomorrow, as you say, is an important hearing. Thank you very much. My guest this evening, Rakesh Singh, is a coach. He's the General Secretary of the Haryana Wrestling Association. He's joining us on the broadcast. He's here to speak on behalf of Brij Bhushan Sharan Singh. Dr. Sunita Godara is an Asian Marathon Champion 1992, joining us on the broadcast. Tehseen Poonawalla is a legal activist. He's joining us on the broadcast as well. Rakesh Singh ji, 1599 पेज की चार्जशीट है और एक एक शब्द जी एक शब्द हमको बता रहा है कि जो रेसलर्स बोल रही हैं वो झूठ नहीं है. आप कह सकते हैं ये तो सिर्फ चार्जशीट है, कोर्ट में बात आगे बनेगी. हाँ, कोर्ट में आगे बनेगी, कोर्ट करेगी फैसला, वो सब ठीक है. लेकिन इस 1600 पेज की चार्जशीट का एक एक शब्द इज द टेस्टिमनी अगेंस्ट व्हाट ब्रिज भूषण शरण सिंह हैज बीन डूइंग फॉर द लास्ट 12 इयर्स. राकेश जी, कब तक आप इस आदमी को डिफेंड करेंगे?
देखिए मैडम, ये एक ना मनगढ़ंत कहानी बना के इन लोगों ने फेडरेशन पर कब्जा करने की नीयत से ये लोग आए थे। 18 तारीख को स्वयं जो आज बोल रही है कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, बबीता, संगीता, गीता, ये एक ही परिवार की हैं लड़कियां, और इन्होंने पहले कहा 1000 लड़कियां, फिर कहा 500, फिर कहा 200। जब ओवरसाइड कमेटी के सामने ये लोग गए तो ये 5 लोग थे। उसके बाद इन्होंने लगा ये तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी होगी है और इससे बात बनेगी नहीं। फिर इन्होंने जो है दूसरी बार जब धरना दिया तो इन्होंने वकील भी अपना वो क्या था, सबसे कपिल सिब्बल जी जो बहुत बड़े वकील हैं, फिर उन्होंने भी जो है इनकी कोर्ट में पैरवी की और चलो मुकदमा दर्ज हुआ। आज जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दी है वो इनके बयान पे, इन्होंने जो लिखित दिया उस पे, आज इनके परिवार के लोग गवाह बन गए हैं। आज जो कोच और रेफरी जो गवाह बने हैं वो धरनाजीवी हैं, वो धरने में इनके साथ थे। उनकी बहन बेटियां आज वो कह रहे थे जी हमारे बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कोच और रेफरी से, भाई 10 साल पहले तुम लोग टूर मारते रहे और अपनी बहनों का शोषण कराते रहे, और आज भी तुम जो है जब तुम्हारा नंबर काट दिया गया किसी कारण से, तुम्हारी लूट को बंद कर दिया गया, तुम्हारी दुकानदारी नेताजी ने बंद कर दी, फिर तुम इन लड़कियों के साथ आके फिर कहते हैं मेरी बहनों के साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। खुद 2018 में एक मीटू कार्यक्रम था, विनेश जी ने आके कहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं पहलवान हूं, मैं रेसलर हूं, भगवान ना करे किसी बेटी के साथ ऐसा हो। आज वो कह रही है मेरे साथ भी अत्याचार हो गया। वो कह रही है मैं ऑफिस में गई, मेरे पार्टनर को जो है ना तोमर जी ने बाहर बिठा दिया। शादी से पहले कोई लड़की पार्टनर को साथ लेके जाए, हमारे संस्कारों में तो ये चीज नहीं है। उसके बाद वो होटल जाती है, उसके बाद कहती मैं दूसरे दिन फिर आई। हमारे संस्कारों में ये भी नहीं है कि मेरी मैंने माँ को हमारे संस्कारों में ये भी नहीं है कि आप लड़कियों का बिना कॉन्सेंट के उनके पेट छुएं, उनका ब्रेस्ट छुएं, उनके बटक छुएं। तो हमारे संस्कारों में वो भी नहीं है। बहुत संस्कारी ब्रिजभूषण शरण सिंह भी नहीं है। आप संस्कारों की तो बात ही मत करिए राकेश सिंह जी। देखिए संस्कारों की तो आप बिल्कुल बात मत करिए। मुझे लगता है कोई पागल व्यक्ति होगा। 12 साल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ मैं ये कहता हूं कि उनका काम क्या था? उनका काम था लड़कियों को नर्चर करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रोटेक्ट करना। क्या किया उसके बदले जरा देख लीजिए आप। उन्होंने रेलवे में, देखिए ब्रिज भूषण की बातें सुनिए, ब्रिज भूषण का काम सुनिए। रेलवे में लड़कियों की टीम ब्रिज भूषण ने बनवाई, लड़कियों की कुश्ती को कितने आगे ले गए हैं वो लोग। उतना तो शायद कोई जिंदगी में को कर भी नहीं सकता। लेकिन आज ब्रिज भूषण को मोहरा बना के अब ये कहते हैं बीजेपी का सांसद है। अब देखिए अगर वो बीजेपी का सांसद है तो पहलवान अपनी मर्जी से ट्रांसफर ले रहे हैं। सुनो, अपनी पोस्टिंग अपनी मर्जी से ले रहे हैं, सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं और वहीं जाके पोस्टिंग ले रहे हैं। तो बीजेपी इनके साथ है, ब्रिज भूषण के साथ है। आज वो विदेश में अपनी मर्जी का पार्टनर लेके और ट्रेडिंग पे गए हुए हैं। आज सरकार का कितना पैसा खराब करके वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, उन्होंने मेडल जीते, मेडल जीतने के बाद नौकरी मिली, पैसा मिला, मान सम्मान मिला, पूरे देश ने सिर पे बिठाया। लेकिन इन्होंने फेडरेशन पे कब्जा करने के लिए एक ये मुहिम रची। जब ये फेल होते लगे फिर उन्होंने अपने एफिडेविट दिए, फेडरेशन पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फेडरेशन पे कब्जा कहां हुआ? फेडरेशन पे कब्जा 12 साल से इसको कब्जा करके ब्रिजभूषण शरण सिंह ही बैठे हुए थे। और एथलीट्स ने बड़ा साफ साफ बोल दिया है कि हमें फेडरेशन नहीं, ये तो ऑफिस बेरर्स बनने का कोई शौक नहीं है। कोई भी लड़कियां, एक मिनट राकेश सिंह जी आप एक बात सुनिए जरा। मेरे को पता नहीं आपकी बिटियां हैं या नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं राकेश सिंह जी, कोई भी लड़की इतनी आसानी से सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किसी पे नहीं लगाती है। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। आज भी इस देश में बाहर आके ये कहने के लिए कि इसने मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, इसने मेरा मोलेस्टेशन किया है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। मैं आपको ये बात बता दूं। अरे 18 जनवरी को ये बोल रही थी हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, 28 मई को सब कुछ हो गया इनके साथ। ये तो इनकी याददाश्त वापस आई, याददाश्त वापस आई ना इनकी। तो फिर तो इनको अंदर से गवाही दी, सपने में आए कि आप ऐसा इनको एलिगेशन लगाओ। और जी
श्रेया, जैसे आपने बिल्कुल सही किया, जरा रुक जाइए। आपने तहसीन, would you बिल्कुल want सही to कहा। respond और to? श्रेया, कैन यू हियर मी? May I come in? I can. Hi, Shreya, may I come Tehseen. in? Go ahead. Good evening. Good evening, thanks. Like you rightly said, Yeah, और मैं इसको sure. थोड़ा हिंदी में बोलूंगा कि संस्कार तो ये भी नहीं होते कि एक alleged molester उस फ्लोर पर अपना कमरा रखे लड़कियों के बीच में जहां पर सारी लड़कियां रहती है। इसकी गवाही फोरेंसिक एविडेंस दिया गया है। संस्कार तो दिल्ली पुलिस की भी ये नहीं होते। मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं कि जब एक महिला जाती है उनके पास और कहती है हमें एफआईआर दर्ज करवाना है, तो महीनों तक वो एफआईआर दर्ज नहीं कराते जब तक जिन व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया, राकेश सिंह जी, कपिल सिब्बल जी और इंसाफ के सिपाही जिसका मैं एक हिस्सा हूं, वो जो उनका फाउंडेशन है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट से डंडा नहीं लगता तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है। संस्कार तो ये भी नहीं है कि नेशनल कमीशन ऑफ विमेन संज्ञान इस मुद्दे का संज्ञान ना ले और एक नोटिस भी वो ना करे इस व्यक्ति को, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्होंने ऑन कैमरा एक दूसरे चैनल पर कहा है कि उन्होंने सिर्फ एक मर्डर किया है, एक मर्डर। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को मैं कोट कर रहा हूं। संस्कार तो ये भी नहीं है कि आप किसी लड़की के पेट को छुओ, या जब कोई लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है आप उसको धक्का मारो, या जब कोई लड़की एथलीट महिला आपसे प्रोटीन पाउडर मांग के तो उसके बदले में उससे फेवर लिया जाता है। संस्कार ये भी नहीं है। तो संस्कार की बात हम छोड़ते हैं और हम आते हैं लीगल पोजीशन पर। द लीगल पोजीशन इज दिस, श्रेया, दैट दीज गर्ल्स आर एथलीट्स, आर चैंपियंस, हैव रन पिलर टू पोस्ट टू रेज दिस complaint against this particular gentleman. Now let's look at what's happened. Not only is this man, this goon, absolutely scot-free in the way he's dealt with a colleague of yours, which is right now on camera, he has bullied, and I say this with a lot of responsibility, the minor victim. And let me give you evidence for that. If the girl who now the government says is not a minor, and therefore the POSCO charges do not apply, was not a minor, was India and the Wrestling Federation and India's passport office and every single department cheating by sending a overage player to compete in minor events? Was India cheating? Look at the lengths the BJP government and the union government has gone to safeguard this MP. This MP is being safeguarded because he has influence over 6 Lok Sabha constituencies. He's a Bahubali. And I repeat, had it not been for Insaf Ke Sipahi, a foundation that Kapil Sibal has started, and had he not gone pro bono on the Honorable Supreme Court, this FIR would not have been registered. And these girls came and have given evidence, a forensic evidence and other evidence, including witnesses who have seen this member of parliament molest them. राकेश सिंह जी, जवाब दीजिए। हम लोग नहीं बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस बोल रही है ही इज लायबल टू बी पनिश्ड। देखिए, दिल्ली पुलिस बोल रही है, जो लड़कियां बोल रही हैं उसको कोरोबोरेट किया है हमने। दिल्ली पुलिस कह रही है हमने कॉल डेटा रिकॉर्ड देखे, चेक किए हैं कि लड़कियां जिस समय की बात कर रही है और जहां की बात कर रही हैं वहीं की समय और बात थी। देखिए, पुलिस, मैं ये कह रहा हूं, पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली, कोर्ट में केस चला गया है और वहां पे वकीलों की बहस होनी है, अपने गवाहों को खरा उतरना है और झूठ को हमेशा ही याद रखना पड़ता है, सच को कभी याद नहीं रखना पड़ता। ये डीजी साईं और ये पहलवानों के बीच का एक गेम है और ये कुश्ती को अपने कब्जे में लेना चाहते थे और इनसे वे बात बनी नहीं। तो आजकल एक तो SC एक्ट और एक 354 इतना आसान है, किसी पे भी आप लगा सकते हो और इस कानून का दुरुपयोग हमारे देश में भरपूर हो रहा है और जम के हो रहा है। आज कोई भी लड़की एक आसानी से राकेश जी, हाँ, ये तो सारा आप देखिए ना, आप देखिए कितनी हरासमेंट होती है। सत्ता का दुरुपयोग क्या होता है ना, पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं। सत्ता आपने बोला ना, लॉ का दुरुपयोग होता है, सत्ता का दुरुपयोग क्या होता है वो हम देख रहे हैं। आज पहलवानों के साथ खड़ी है, होती है क्या नेताओं पे? पहलवानों का साथ दिया, कुछ भी कर दें चलेगा। हम देखिए बीजेपी कहाँ दिया? देखिए, अगर दिया होता तो ये आदमी सरकार के खिलाफ खड़े, सरकार मंच जर्नलिस्ट को धमका नहीं रहा होता। तो सरकार तो बीजेपी दिन के साथ खड़ी है। नहीं, वो धमकाने की बात नहीं थी, मेंटल हैरेसमेंट हो सकता है। 6 महीने से एक ही बात उसको बोली जा रही है। नहीं, मेंटल हैरेसमेंट लड़कियों का हुआ है या मेंटल हैरेसमेंट राकेश जी को चुप करो। क्या बात कर रहे हैं? जिस लड़की को श्रेया, हाँ, देखो
श्रेया मेरे को बोलने दो। देखो, पहली बात तो राकेश जी को पता ही नहीं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है। ये उस जो ब्रजभूषण है उन्होंने इसको सेक्रेटरी बनाया है, इसलिए तो उसी की बात करेंगे। तो इनकी बात तो जो कर रहे हैं करने दो। लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूं कि अगर इस वक्त न्याय का साथ नहीं दिया, न्याय ने ब्रजभूषण को पनिश नहीं किया, अपनी आईओएस सोती रह गई और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सोती रह गई, तो पूरे स्पोर्ट्स एरिना में, ये सिर्फ एक रेसलिंग का ही इशू नहीं है, ये पूरे स्पोर्ट्स एरिना में जहां तहां हो रहा है, वहां पर लड़कियां स्पोर्ट्स में कैसे आएंगी? इतना क्या इंप्रेशन पड़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे और हमारे इंडियन लेवल पे? क्या सोच रही हैं वो माताएं, वो पिता जो अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में भेजते हैं? क्योंकि जैसा आपने बताया, जो टेस्टिमोनीज आपने बताई, ऐसा जब होता है तो अगर ये यूएस होता ना, तो एज पर स्पोर्ट्स लॉ ये बंदे को 200 साल के लिए बैन कर दिया जाता, जेल हो जाती। आपने अगर वो जिम्नास्ट वाला स्टोरी शायद आपने भी कहा था अपने चैनल में, यूएस ने उसको 157 इयर्स की जेल दी। ये बंदा रोज मिसकंडक्ट कर रहा है ब्रजभूषण, और साथ में ये अब राकेश जी भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल हो जाती है एज पर स्पोर्ट्स लॉ। और अगर स्पोर्ट्स लॉ हमारे आईओ में है, आईओ में पैनल है डिसफंक्शनल, वो फंक्शन नहीं कर रहा है। अगर वो भी फंक्शन करना शुरू करे तो एटलीस्ट शेम तो करो, लाइव बैन कर दो इन लोगों को। उसमें ये राकेश जी भी जाएंगे लाइव बैन। ब्रजभूषण को तो आज से 12 साल पहले जब इन लड़कियों ने पहली बार थोड़ी सी आवाज उठाई थी तभी बैन हो जाना चाहिए था। जब इन्होंने 3 साल पहले आवाज उठाई थी तभी इसको बैन हो जाना चाहिए था। स्पोर्ट्स से इनका, ऐसे लोगों का स्पोर्ट्स में रहना बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। और वो सेक्सुअल हरेसमेंट, ये बोलते हैं 12 साल पहले सो रही थी, उसके बाद इनको याद नहीं आया, इनको शर्म नहीं आती है ये कहते हुए, इनको सेक्सुअल हरेसमेंट के रूल्स नहीं पता है। लड़की चाहे कभी भी 20 साल बाद भी अगर अपनी आवाज उठाएगी ना, उस जिम्नास्ट ने यूएस में 20 साल बाद आवाज उठाई, 97 का केस था और अब जाके उसको पनिशमेंट मिला है, 157 की जेल हुई है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस ब्रजभूषण को स्पोर्ट्स से तो आउट करना चाहिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को और आईओए को। सो मोटो एक्शन ले लें, अपनी जो सोई हुई एथिक्स पैनल है उसको जगा लें। और ऐसा नहीं है कि इनको सब पता नहीं है, सब पता है। हमने इनको 4 मई को लेटर लिखा। मैं बताती हूँ, नाडा की तरह, akin to NADA, they should have ethics panel, which they have, but it is dysfunctional, and sports ministry has to notify, which sports ministry knows very well, and they have just given me the confirmation also. Okay. Yeah, 1 line confirmation, acknowledgement of my letter. And see, NADA came in picture in 2009. I was fighting against doping in sports since 1998, and it took 8 years. And now I don't know how many years they will take to bring ethics sports panel, like sports law को follow करने के लिए, जिसमें कि ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इनको जेल करो, बैन करो, जो भी करो, आउट ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये बकवास नहीं करेंगे। राकेश जी का एक एक शब्द बकवास है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए एक एक चीज बकवास है। जो ये बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होनी चाहिए। ओके, आप जैसी लेडी टीवी पे आके ना फालतू के कानून झाड़ती हैं। सारी बातों का आपको भी नॉलेज है कि क्या क्या लड़कियां करती हैं, आपको सब पता है। राकेश जी एक मिनट, कैरेक्टर असैसिनेशन मत करिए ना किसी का। आपकी भी बेटी है, आपकी भी वाइफ है, आपकी भी बहन है, कैरेक्टर असैसिनेशन मत करिए। वो 6 लड़कियां अपनी टेस्टिमनी दिल्ली पुलिस को दे चुकी हैं। टीवी पे आके और फालतू की बातें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। राकेश जी, कानून की बात है, कानून की बात करें। राकेश जी, फालतू की बात तो आप भी कर रहे हैं, फालतू की बात तो आप कर रहे हैं। राकेश जी, फालतू की बात तो आप भी कर रहे हैं ना। मैं तो कोई फालतू नहीं कर रहा। ये बोलती शर्म आनी चाहिए, शर्म तो इनको गोदारा को आनी चाहिए। क्यों ब्रिज भूषण शरण सिंह को शर्म नहीं आनी चाहिए कि 6 of India's top wrestlers have testified against him and there's now a charge sheet against him? उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? बीजेपी को शर्म नहीं आनी चाहिए कि ऐसे एमपी को अभी तक रख रखा है? राकेश जी, कैसी बात कर रहे हैं और किसका सपोर्ट कर रहे हैं ये तो देख लीजिए। उन्होंने आपको बनाया होगा हरियाणा चीफ, हरियाणा फेडरेशन का चीफ, ठीक है, बनाया होगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन गलत का साथ तो मत दीजिए ना, गलत का साथ मत दीजिए। हिस्ट्री विल जज यू। गलत का साथ मत दीजिए। आपकी बेटियां आपसे बोलेंगी पापा क्या कर रहे हैं। स्पेशल फैसिलिटी दे रहे हैं हम लोगों को। Tehseen, just come in here. Give me a minute. कुश्ती का सत्यानाश कर दिया इन 3 पहलवानों ने। सुनीता जी, एक मिनट। नहीं, कुश्ती का किसने सत्यानाश किया ये तो हम देख रहे हैं।
ये हम देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से कि कुश्ती का सत्यानाश पिछले 12 साल में किसने किया है. Dr. Sunita Godara has, spoken about Larry Nassar, who was not just the coach, he was the doctor of the US gymnast team, accused of, by the end of it, 265 women athletes had testified against him. And this sexual abuse had been going on ever since he was in the University of Chicago. And it took 20 years for this man to be finally brought to justice, despite the fact that there was, even in the US, a conspiracy of silence, an attempt to protect this man. I want to understand from you, if you at all understand where this man's arrogance and defiance is coming from. See, in India, the powerful, rich, powerful, influential people, that question was for Tehseen. They are always arrogant. Secondly, इनको पता नहीं क्यों ये गलतफहमी रहती है. Sunita ji, that question's for me. Okay, sorry. Thank you. Shreya, the world over, men want to control women. We men want to dominate women's bodies. We men want to character assassinate women. We men want women to fall and behave the way we want. Look at how this man, this member of parliament, behaves with your journalist who's asking a legitimate question. If this man can do this in Delhi, in the airport, in the heart of the capital of India, a member of parliament, imagine what he's doing to weak girls who require protein powder, help, medicines, etc., come from poor backgrounds in the privacy of a hotel bedroom or in the privacy of a hotel room. This man is arrogant and is drunk on lust and power. And the fact of the matter is, you have people like Rakesh Singh sitting on national television and character assassinating women like Dr. Sunita and others on national television saying, "Hum to jante hi ladkiyan kya kar rahi hai, in ladkiyon ka character kya hai." Why is it, Shreya, the girl is always the victim? Why is it that this particular MP's son continues to be vice president of the Wrestling Federation of India? Why is it that his son-in-law is running the Wrestling Association? Why is it that his family is running? These are questions. The question to be asked is, will people, common citizens today watching Mirror Now, want their daughters to become wrestlers? Trust their daughters to go to camps like this. What we are doing is not just hurting these women. We are hurting women in general who want to take up sports, who've brought us so much laurels. And I'm saying this again. If this can happen to Olympic medal winners in Delhi, imagine what will happen in smaller towns. Therefore, it is important that tomorrow the courts come down and lock him up. If there was any other person in this man's place, he would be behind bars. That this man can get away throwing a Times Now, Mirror Now camera away and walk away shows how he's being protected by none other than the top officers of this country. And that, I think, is terrible. Okay, we'll leave it there. Tomorrow is an important hearing in the case. We'll be keeping track of that. Tehseen Poonawalla, thank you very much for joining us. Dr. Godara, thank you very much. Rakesh Singh ji, thank you very much for joining us as well. On that note, I'm slipping into a quick break on the show. There's more coming up on the other side. We have a special interview lined up for you with Dr. Shashi Tharoor. Do stay with us.